So, hi everyone, good morning to one and all, and I'm happy to be able to connect to you every single day at the morning transform session. And today I'll give you a small example, and it's a very small example, and then I'll convert it into a ask me session because I thought there are a lot of queries accumulating that we have to solve. So I will begin by a small thought, and then I will convert it into a ask me session so that if you have any queries, I will be happy to solve them today. Okay. So my thought that I have for you is a very important thought. It says, there is a line which says, whether you think you can or you think you can't, you are right either ways. So try to understand the meaning of this line. It is going to be very useful for us going forward in our life. Suppose you approach your NEET PG exam with a thought process, or your FMGE exam with a thought process that I will not be able to do it. You are giving your brain negative thought, and when you give your brain negative thought, your brain, or your plasticity of your brain, aligns according to that thought, and the brain tries to prove you right. Brain is your servant. Try to understand. Don't let it become your master. What will happen is, if you say that I will not be able to do well in NEET PG, I will not be able to do well in my FMG exam, you are training and telling your servant, your brain, to follow the course, and the brain will try to prove you right. If you say I can, if you say I can pass the exam with flying colors, I can do it, the brain will try to prove itself right. This is called a plasticity. And it is very important to have that positive thought process in my head, because more you say that you cannot, more you are creating trouble for yourself. And I just thought I should tell you this, that it works even when you approach a MCQ. Okay. Now I want you to understand, suppose you're doing a pharmacology MCQ. Before doing the MCQ, if you tell your brain that I will not be able to solve it, the brain will try to prove it कि boss इससे नहीं हो पाएगा. But if you are wanting to do the MCQ, say मैं कर सकता हूँ. So how can I say this? I use a word very often in my day-to-day life. It was so common in my day-to-day practice that I think a few years back, one day I got up in the morning, I said I should write a book about it. And that word that I keep saying is called as yes I can. Yes, I can. So this is a book by me. It's one of the bestsellers on Amazon as well. So my thought process is that whenever you ask me a question, if I don't know, or even if I don't know at that particular moment, you will see my default response usually will be yes, I can. Because when I say I can, my brain will start trying to prove me right कि बॉस ये कह रहा है कि कर सकता है, तो अब रास्ता निकालना पड़ेगा ना, find the way. Okay. So I want you all from today onwards, till the time you appear for your FMG exam, till the time you appear for your NEET PG exam, you have to keep saying this again and again. Yes, I can. You will not say मैं नहीं कर सकता. नहीं कर सकता तो फिर नहीं हो पाएगा. कर सकता है तभी तो कर पाएंगे. And even at an organizational level, and I was speaking. I'm on this Saturday. I'm speaking Mumbai in a leadership summit, and in that leadership summit, there is a session that I have to talk about, how a doctor or a radiologist or a specialist can become a leader. There's a session. In that session, my thought is I will talk about that if you're a leader, what is the difference between a leader and a follower? A leader cannot be okay with losing. Suppose you're leading an organization, you cannot be okay with losing, or you cannot be okay with not doing well. You have to constantly say, yes, we can. So, so this is a very powerful line. It goes from MCQ solving to career building and to going onwards to build, going on to, even being a leader in your organization. You have to say, yes, I can. If you can't, if you say, मैं नहीं कर सकता, तो फिर अब leader ही कह रहा नहीं कर सकता, तो पीछे वाले लोग तो सब गए ना. So when you're leading the game, when you're a leader in organization or any particular field, if you're leading it, the leader has to say, I will win. Because if the leader कहता है कि नहीं जीतेंगे, तो वो you're leading your entire army to a disaster. Okay, क्योंकि वो आपने एक बचपन में भी सुना होगा that if a lion is leading the show, he will, even if there are dogs behind it, वो जीतेगा, because क्योंकि जो leader है वो शेर है.
अगर लीडर ही शेयर नहीं है तो फिर पीछे वाला सब गड़बड़ हो जाएगा. And I see somebody saying, sir, where is madam right now? So Rodipti is taking a class for FMG students today. She had a DFX session. So DAMS conducts a DAMS FMG Express session called as DFX, which is one of the most high yield revision course in the country. Almost 100% strike rate every year. So today I think there is a Ops Gynae session in DAMS Gautam Nagar, which is also available live on the app in the FMG section. So that is why you have me alone. So that is the thought. That is the thought. Thought that I wanted you to have today is called as yes, I can. Try saying this multiple times. I say this many times. It is such a common word in my vocabulary that it stuck to me that why am I not talking about it? And so that is the thought. So can you say, yes, I can to all your problems? Okay, so let's take now your queries. Whatever your queries are, please feel free to put them in the chat, in the comments. Let us spend next 5-6 minutes answering your queries so that, if you have any doubts or any queries regarding your preparation strategy, we will be able to answer. Okay, I see a lot of yes, I cans in the comments. Yes. Any other queries you have? Okay. I see a bacha saying, when I solve 50 to 80 questions, okay. So Soumya Jaswar, when you do 50 questions, 80 questions, you're okay. But when you have to give a GT, you find it difficult because of the stamina. The simplest thing is when you have to do 200 questions, 3 hours, then it becomes a question of how long can I remain fully concentrated. I would strongly recommend that do this more often. This is the villain of your preparation. जो अगर मुश्किल लगता है उसको हराते हैं. Try giving more and more GTs with the being merciless on yourself. बिल्कुल ब्रेक मत देना. टाइम के साथ पूरा टाइम बैठना. Okay, I see many students when they are giving a GT, they try to submit it faster. It is not the right thing. You have to spend the full 3 hours. पूरा 3 घंटे बिताएंगे ताकि असली एग्जाम में भी 3 घंटे बिता पाए. That is very important. I see now a query saying, sir, I have done DVT twice before postponed. Can I give it a break and do it? Definitely. Greenly, if it is a good idea, you've already done DVT twice, you can do it in the last 7 to 10 days directly and use this time to work on your weakness, work on your LRRs. Okay. And I see एक बच्चा कह रहा है, सर मेरे सीरीज में 150 करेक्ट आ रहे हैं, जीटी में स्कोर ड्रॉप हो गया. अंशिता आई थिंक कोई बात नहीं. देखो, ये हर पेपर में, हर एग्जाम में देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस. कभी कभी ऐसा होता है किसी एग्जाम में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मेरे और कुछ थोड़े वीक होते हैं. तो कभी कभी अप एंड डाउन हो जाता है, बट कंसिस्टेंटली कीप गिविंग देम सो दैट दी यू रीच टू अ लेवल वेयर इट बिकम्स कंसिस्टेंट. है ना, थोड़ा सा टर्बुलेंट आता है, बाद में कंसिस्टेंट हो जाता है. रुचा ने पूछा, सर टीएनडी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईटी होते हैं कि हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं? दोनों होते हैं. सो वी ट्राई टू डू अ मिक्स. Every teacher in TND tries their best कि they should be able to predict the paper. So वो पूरी कोशिश करते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स को भी उठाएं और पीवाईटी. जैसे कोई नई चीज आई है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर मेरा TND देखोगे तो जैसे अभी एक डुअल सोर्स सीटी है जो गाउट में यूज किया जाता है. सो आई फील इट इज अ पोटेंशियल इनिशिएट क्वेश्चन क्योंकि एम्स में काफी कॉमनली यूज किया जा रहा है. सो आई कीप मेकिंग दिस एज अ क्वेश्चन कि व्हाट विल यू डू, व्हाट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड. इट हैज नेवर बीन आस्क्ड, बट इट्स अ हाई यील्ड टॉपिक, कैन कम एनी टाइम. और कुछ ऐसा क्वेश्चन न्यूमोथोराक्स जो हमेशा किसी ना किसी तरह से आएगा, यू विल फाइंड इट इन माय टीएनडी. सो दिस इज हाउ द टीचर्स वुड प्ले अराउंड इन द टीएनडी. दे विल कीप हाई यील्ड आल्सो एंड दे विल कीप पीवाईटीज आल्सो एंड देन डिस्कस एट लेंथ. जो क्वेश्चन है उसके अलावा भी सारी चीजें फिर डिस्कशन के अंदर कवर कर लेते हैं. ओके एक बच्चा कह रहा है, सहीना साइमा, योर सीबीएमई अनैट वीडियोस आर नॉट ओपनिंग. बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर कोर्स. सो व्हेन यू गो टू द ऐप, देयर इज अ स्पेशल कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. उसके अंदर ये अवेलेबल है और उसके अंदर ये अनलॉक्ड अवेलेबल है. सो प्लीज सी दैट. और आई सी, सर हाउ टू मेक सेकेंड रिवीजन. ओके सर, सेकेंड रिवीजन को मैं वीडियो देख के करूं कि नोट से कर लूं? Usually it is at this point of time where we have say 33 or 11, around 40-45 days approximately left. Then usually you have to shift to notes.
बिकॉज इस समय पे अगर आप वीडियो देखोगे और बड़े वाले वीडियो देखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। एलएलआर के या डीवीटी के वीडियो देखने हैं, स्टिल ओके है, वो देख सकते हैं। लेकिन कल को आप कहते हो मैं अभी मेन लेक्चर के नोट्स देख रहा हूँ या पूरा का पूरा वीडियो देख रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम कम रह गया है, what I will do is I'll suggest a middle way out. If you want to see a main डैम्स का जो बैक टू बेसिक्स के पैनल का कोई वीडियो अभी देखना है, तो पहले उसका कॉर्टेक्स एआई का बटन दबा के यू विल सी द गोल्डन पॉइंट्स and see, okay, these are the most important points that I need to know, and then you can skip the video also if you feel confident. And how will you know you are confident? After every video in the app there is a AI predictive test. Based on those points you can appear for the AI predictive test and then go ahead and do it. Okay. I am, sir, I'm feeling low on energy and it is affecting even my GT performance. So probably, there could be multiple factors for feeling low on energy. One is your sleep wake cycle could be an issue, and second is sometimes it is the reverse, lack of physical exercise. And you will see me and Dr. Deepti will always talk about it कि ना जो हमारा वो है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ मेंटल हार्ड वर्क, लेकिन फिजिकल हार्ड वर्क नहीं हो रहा होता। सो दैट काइंड ऑफ, मतलब लगता है हम थक गए लेकिन इट इज मेंटल एग्जॉशन नॉट फिजिकल। सो वो भी एक लैक ऑफ एनर्जी का कारण होता है। इट डजंट गिव अस द एंडोर्फिन्स दैट आर नीडेड। सो एक ब्रिस्क वॉक इन योर ब्रेक्स और अ जॉग, गर्मी बहुत है, आई अंडरस्टैंड दैट, तो थोड़ा सा शाम के समय पे जब मौसम थोड़ा ठीक हो, इफ यू गो फॉर अ ब्रीफ वॉक इट विल रिचार्ज योर बैटरीज बेटा। ओके। एक बच्चे ने पूछा, सजल अरोड़ा सर, विद इंटर्नशिप some departments have excessive work and it is gets a bit demotivating that you are not able to put your daily goal. Sajal Arora, my answer to you is कि जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो बिजी तो होगा ही ना, कई जगह बिजी होगा, कई जगह टाइम होगा, और कभी कभी हम पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे 3 रूल है इंटर्नशिप के। पहला, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक एवरी डे काउंट। मतलब चाहे वो दिन बिजी है, चाहे वो दिन इजी है, मतलब चाहे आज मेरा पीएसएम का पोस्टिंग चल रहा है, चाहे मेडिसिन का, रोज कुछ तो पढ़ना है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, व्हेन आई एम इन अ इजी पोस्टिंग आई विल डू अ बिगर सब्जेक्ट, व्हेन आई एम इन अ बिजी पोस्टिंग आई विल डू अ शॉर्टर सब्जेक्ट, लेकिन कुछ तो रोज करूंगा। So if you're making progress every day, it doesn't matter how much progress, you will be able to get a good rank with internship. I've seen last year NEET PG rank 1 was a student with a very busy internship. फिर भी उसने किया, यही रूल फॉलो किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेक प्रोग्रेस एवरी डे, ओके, लर्न एवरी डे। ये जो आप कह रहे हो ना, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है क्योंकि काम करना है, लेकिन ये भी तो सोच के आगे भी तो बन के यही काम करना है। सो व्हाई नॉट आस्क क्वेश्चंस, why not ask questions? If you are in a OT, why not see कि ये एनेस्थीसिया क्या इक्विपमेंट पड़ा है, ये क्या कर रहे हैं, बात करो, पूछो। कभी कभी डायरेक्ट उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। लर्न एवरीवेयर, ओके। थर्ड इज डोंट अकोमुलेट अननेसेसरी मटेरियल, stick to, if you are in a busy internship and you have a NEET PG in August, then you stick to DVT, maximum add live rapid revision, grand tests, okay. Okay beta, let us see more questions. एक बच्चा कह रहा है, सर आई एम पुटिंग इन द आवर्स बट डूइंग लेस कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज, ओके बेटा, मुझे क्या लग रहा है, फोकस की कमी लग रही है मुझे यहाँ पे। क्या आप कह रहे हो मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं आ रही, इसमें फोकस की कमी है। फोकस के लिए ना मैं हमेशा बताता हूँ, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक, कि आप 45 मिनट्स का अलार्म लगाओ, एक डेफिनेट टारगेट लिखो चेकलिस्ट के अंदर कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, 45 मिनट्स डेडिकेटेड पढ़ो, उस समय फोन को हटा दो, सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, पढ़ने के बाद फिर उसको डिस्ट्रैक्शन हटाने के बाद फिर 2-5 मिनट का ब्रेक लेके फिर पढ़ेंगे। सो डू इट इन दोस पोमोडोरोस and use a checklist to monitor your progress. That is very important, otherwise your output is not coming. Okay, सर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट पढूं और कौन सा ना करूं। ओके, सो माय आंसर नरी फॉर यू इज कि यू कैन फॉलो अ शेड्यूल। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ 1 month or a 2 month maybe period for your TND, test and discussion course, and then make a schedule, make it as a checklist. उस शेड्यूल को ना रैंडम बनाते, नहीं बनता रैंडम तो प्रॉफ के हिसाब से बनाते, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट पीजी में 3rd 4th ईयर के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 4th ईयर, देन 3rd ईयर, देन 2nd ईयर, देन 1st ईयर, और टीएनडी के पेपर्स कर डाल। सो दैट विल गिव यू द शेड्यूल, or you can use the class test or SWTs that you have in your subscription. Okay, I am not able to give max after the postponement, मेरा momentum खत्म हो गया। बेटा, it is not like your momentum, it is like
हाउ द एग्जाम इज स्ट्रक्चर्ड। जब भी हम क्रिकेट के अंदर भी आखिरी 5 ओवर में आते हैं ना, हमें पता होता है अब जो भी हो अब तो रन बनाने हैं, सो वी डोंट बॉदर अबाउट विकेट, ये वो, अपना रन मारते हैं, खेलते हैं। वैसे ही जब अभी अब नीट पीजी होने वाला था, यू वर इन दी स्लॉग ओवर माइंडसेट। अभी पता चला अभी तो ज्यादा टाइम है, सो अभी अब बचा के रखना है, अभी बर्नआउट भी नहीं होना है, अभी थकना भी नहीं है, तो इसलिए, है ना। एंड आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि सर मैडम कहाँ रहेगी। मैडम इज टेकिंग द डीएफएक्स सेशन फॉर आवर एफएमजी स्टूडेंट्स इन डैम्स गौतम नगर। दैट इज व्हाई आई एम हियर अलोन टू टेक योर क्वेरीज। Okay. Sir, what about TND? So test and discussion is a very important course where what I've seen is students who may have studied earlier from any resource or who have done their one reading of your DAMS resource. Now you need a schedule to keep you going. So TND gives you that schedule and a test, a discussion at length. The TND discussion is very different from a test discussion because TND के अंदर ना teachers try their best to cover the entire syllabus in that discussion. TND का goal is to revise the entire subject. Okay. And let's see, फार्मा और पैथ जितनी भी बार पढ़ रहा हूँ हो नहीं पा रहा, ग्रिप नहीं आ रहा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटा, फिर कम से कम इन दोनों में लाइव रैपिड रिवीजन के नोट्स कर ले, एलआरआर के नोट्स कर ले, है ना। क्योंकि अभी क्या है ना, अगर मेरे कोई सब्जेक्ट वीक है, जो फार्मा और पैथ है दोनों बड़े सब्जेक्ट हैं, तो फिर इसमें शॉर्टकट नहीं करते, खाली लाइव रैपिड रिवीजन और डीबीटी का कॉम्बिनेशन कर ले, ठीक है, बहुत जरूरी है। सेम थिंग आई सी शिल्पी चौहान इज ऑल्सो आस्किंग कि सर फार्मा का क्या करें। यही यही इसका तरीका है कि डीबीटी और लाइव रैपिड रिवीजन का कम से कम इतना तो याद कर लो, है ना। ओके। एक बच्चा कह रहा है सर आफ्टर फेस टू फेस कैन आई वॉच एलआरआर टू कंसाइज माय नोट्स। डेफिनेटली, दैट इज द पर्पस। एलआरआर इज अ कंसाइज वर्जन ऑफ योर रेगुलर कोर्स which is created to be done rapidly to review it in the end. That is the idea. DVT is a concept where in 7 days entire MBBS has been merged into a 7-day capsule. तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है, दोनों को जोड़ने से ज्यादा आसान हो पाएगा। ओके, लेट्स सी सर। ओके सर, पीवाईक्यू के बाप 3.0 का पीडीएफ मैंने देख लिया है, डन ओनली वंस। अच्छा, आपने ना एक बार वीडियो कर लिया अखिल, पीवाईक्यू पूरा देख लिया है, तो आप पीडीएफ को आप चाहे तो आखिरी 10 दिन में कभी शेड्यूल करके एक बार रिव्यू कर लेना। अगर नहीं भी करोगे ना, बिकॉज यू हैव अटेंडेड द लाइव सेशन, द मेमोरी विल बी देयर, द ऑडिटरी मेमोरी व्हेन द टीचर इज टीचिंग विल बी देयर, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। Okay. Okay. So I also wanted to share with you some thoughts on. I think there is one of the thought that I have, which I'm sure many of you must be using already, but many of you may not be aware of. I'll just share it with you that there is a section on the app called as the case of the day section. Are you using it? Case of the day. So what I'll do is I will quickly take out the image of the case of the day. How many of you have attempted the case of the day? So, and what we have done is we have now started a section called as case of the day every day, where a clinical case is being discussed in the app. And we have picked up, so far we have picked up the diseases which are very common and very important from exam perspective. Like, let me, I'm waiting for the image to load on my system. I'll just share with you today's image. Wait just 1 second. Okay. Let me just share with you the today's image and I'll ask you. Okay. So this is the case of the day that we shared today on the app. We can see already you are answering the Gover sign. Very good. So this is what we shared, and it's very classical thing. And this is one of my dreams that I've always wanted to have a section in the app. We have a daily quiz section. Now we have a case of the day section where every day a case is put up by the editors who work very hard to find the usual things, have a discussion with the teachers and then put it up. It's a very interesting top case. I am thinking there should be exam questions directly from this section because बहुत ही high yield section बन गया ये. And another thing that I think many of you are not using because of various reasons that we are not used to studying in a certain manner, है ना. Let me just ask you, let's see if you are able to tell me. Now suppose you have a doubt on a topic, suppose you have a doubt on a small thing, how do you resolve that doubt? So what we have done on the app now is I have now added
a section on the app called as Cortex AI at the bottom of your section where you can ask a doubt to the Cortex. Let me see. So let me just add it for you. Just give me 1 second. Now, can you are you able to see it? So I'm asking what is the MRI appearance of CSF? And the Cortex AI is answering what is MRI and what is the T1 weighted image, what is the T2 weighted image. You can ask your doubts. The reason we have created is कि बहुत सारे लोगों के पास maybe you don't know what AI is and how to leverage the AI to your power. So there is a 24/7 AI free of cost available right now in your app. You know, maybe in future there might be cost of using all this. As of now, we are bearing the cost of every query that you put on, but it is based on the DAMS material. So I wanted you to understand that because as doctors you are always skeptical कि भाई ये सही भी बता रहा है कि गलत बता रहा है. So this Cortex AI is based on the DAMS material. So what we have done is we have trained the AI on our entire of material of 25 years. So you can, there are two things that Cortex AI is doing. One is query resolution, one is summarizing your videos, third is predictive test, fourth is your performance analysis. If you're using it, I am sure it should be giving you the edge. मतलब मैं चाहता हूँ आप एक तो गोल्डन पॉइंट्स है बिल्कुल ठीक है आई थिंक कृष्णा उसको यूज भी कर रहा है वेरी गुड एक गोल्डन पॉइंट से अलग फीचर है जो कम बच्चे अभी देख रहे हैं क्योंकि आदत नहीं है अभी डॉक्टर्स को एआई को यूज करने का वो ऐसा है देखो वेयर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू इट है ना आप अपने आप से उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी अगेन मेरा ना मेरा ये आप सबसे कहना है कि ये ना जैसे अब आप देखोगे ना कुछ लोग ना जैसे पहले गूगल आया था ना तब पहले जब शुरू मेरे तो जिंदगी में मैंने सब कुछ देखा है जब गूगल आया ना सब तो कोई भी गूगल से सर्च करके बताता था सब कहते थे तू गूगल से बता रहा है तो अपने आप से बता बाद में सभी को पता चल गया गूगल से देखना ही पड़ेगा बिकॉज यू सर्च फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज एंड सी उसी तरह से अभी एआई से जैसे अपन आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हो डाउट कर सकते हो कुछ लोग बोलेंगे तू एआई से कर रहा है तो हैरिसन से क्यों नहीं कर रहा जब तेरे पास पूरा एक्सेस है नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस कॉर्टेक्स एआई इज बेस्ड ऑन द डैम्स मटेरियल okay and now we have even made a better version of back to basics all the missing topics have been updated teachers have worked very hard almost every subject is updated there some are in the process and I think on 26th we will be releasing all the new things that teachers have done in a video will be releasing what all have been updated but now the new version is very very even more doable and even more high yield so not only doable more high yield also and so those were the thoughts that I had with you that कि अभी ना कभी देखो अगर कोई ये सोचे कि मैं टेक्नोलॉजी मेरा दुश्मन है या वो सोचे मेरा दोस्त है दोस्त बना लो ना मैं दे तो रहा हूँ तुम्हें सब मेरा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज की तारीख में माई गोल इज इफ यू डिसेबल एवरी अदर थिंग ऑन योर फोन चाहे गूगल भी हटा दे चैट जीपीटी भी हटा दे सब कुछ हटा दे यूट्यूब पे हटा दे और इंस्टाग्राम पे हटा दे तुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा ये रोज का मेरा वीडियो भी तेरे ऐप पे लाइव आएगा जैसे हमारे डॉक्टर्स लाउंज सेक्शन के अंदर केस ऑफ द डे तेरा देखने का मन है वो भी वहां मिलेंगे जो छोटे टेस्ट तुम टेलीग्राम में दे रहे थे वो अब मैं टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ एमआईक्यू के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक जगह बना दूं तेरे लिए सिर्फ एक जगह सो बोलेगा सर नहीं अगर मुझे कोई किताब खरीदनी हुई तो अमेजोन पे जाना पड़ेगा वो भी नहीं जाना पड़ेगा वो भी सेक्शन मैंने ऐप पे दे दिए मैंने ऐप पे दे दी अभी मेरे लिए इट्स वेरी मैटर ऑफ प्राउड दैट इवन लिटमैन स्टेथोस्कोप्स आर नाउ अवेलेबल ऑन द डैम्स ऐप यू कैन यू बिकॉज इफ यू वांट टू गेट अ से लिटमैन स्टेथोस्कोप तो भी कहाँ जाना है वो भी वहीं पे वहां मिल रहे हैं लिटमैन के साथ वी हैव अ पार्टनरशिप नाउ यू वांट टू बाय अ टैब फॉर योर राइटिंग कुछ भी करना चाहते हो सब ऐप पे अवेलेबल कर दिया मैंने सो माई गोल इज कि एक जगह बनाता हूं ताकि पढ़ने वाला बच्चा वो बाकी सब जगह से हट जाए क्योंकि ये पढ़ने वाला बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है ना ये उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है आई ऑल्सो आई टॉक्ड अबाउट इट कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नाउ वी हैव अ सिचुएशन वेयर देयर ब्रेन हैज बिकम लाइक पॉपकॉर्न मैंने बताया था ना पॉपकॉर्न माने थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ रहा है इंस्टा देखना है अरे ट्विटर पे पेपर पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा यार ये मतलब उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा उसका दिमाग एक जगह स्थिर होके पढ़ ही नहीं पा रहा इट इज कॉन्स्टेंटली बबलिंग विद डिस्टर्बेंसेस एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड जीतने नहीं दे रहा हर अगर फोकस करके अगले 45 डेज पूरा पढ़ लूंगा तो मैं पक्का जीत जाऊंगा
If you focus and study for 45 days, you will win it. You will win it. मैं कह रहा हूँ आप पक्का जीतोगे, पक्का. ठीक है, कोशिश करेंगे. So that is the idea that I wanted to share with you, and I wanted to take your doubts. And Dr. Deepti could not be here today because she's taking a DFX session for our FMG students in DAMS Gautam Nagar. So unfortunately she's not here, and I'm here with you today. But I always love to be with you. That's my promise. Every day 10 a.m. in the morning we will meet together in the transform section. I wish you all the best, and I wish that you have a productive day ahead. See you tomorrow again at 10 a.m.